Assalamu alaikum. I welcome you all in Gets Pharma Webit Learning Cell. During the Ramazan in summers, extended meal time, time, altered meal schedule, and dehydration can pose a challenge in maintaining blood glucose levels. This webinar is an academic collaboration of Gets Pharma and Buckeye Institute of Diabetes and Endocrinology, that is BITE. And we have our elite expert in the topic of diabetes and Ramzan, that is Professor Yaqub Amdani with us, who will unravel the myths and facts of sugar control during the holy month and further in post-Ramadan period as well when we eat carbs without abstinence. Along with, we have a session with Ms. Rabia Imtiaz as well. She is a senior clinical dietitian in White. Ms. Rabia will further elaborate the do's and don'ts of Sari and Iftar for diabetic patients with reference of the book Ramzan, Riza or Diabetes, which was recently launched by White in Diabetes and Ramzan Conference 2020. I will now request Professor Yaqub Amidani to conduct the session, followed by Ms. Rabianti. Sir, welcome you all. Thank you, Ahmed, for your nice introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu nusalli ala Rasulil Kareem. रमज़ान आप सबको मुबारक हो। बहुत हम पहला अशरा से गुजर चुके हैं और अब माशाल्लाह दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसके लिए रहमत बनाए और हमारे लिए इसमें खूब अल्लाह से करीब होने का जरिया बनाए और हमारे ऊपर जो बलाएं वबाएं वो सब जो आई हुई हैं वो अल्लाह पाक दूर फरमाए। The prevalence of diabetes. I will be talking on management of diabetes during Ramazan and some salient features. The prevalence of diabetes is increasing in the Muslim majority areas, and you can see that the recent estimates suggest that 148 million Muslims are living with diabetes globally. So a lot of people with diabetes are living in the world. And as you can see that a lot of people fast with diabetes, like in this study which was done 10 years back, a CREED study showed that 94.2% people with diabetes fasted for more than 15 days and 63.6%, that is 2/3 of the patient fasted every day. So people with diabetes are fasting worldwide. And as you can see in this figure that there, against the global average increase in diabetes of about 55%, you can see in MENA region 104% rise is expected up till 2040. In sub-Saharan Africa, 141% rise is expected. And in Southeast Asia, 79% rise against the global rise of 55%. So these are all Muslim dominant areas. And you can see diabetes is increasing in Muslim dominant areas. And so people with diabetes, they have to fast during the month of Ramazan. So we are talking about millions of people with diabetes who have to fast. So it's not a problem of or a masala of just few people, but it's a masala of or problem related to many people in the world. And actually it's not a problem, but it's how to manage this issue during Ramazan. It's not difficult to manage these patients during Ramazan, but it requires some education, some awareness as regards doctors' awareness is concerned. Doctors should be aware of this, how to manage these people, and also the patient should be educated enough to fast safely during Ramazan. So what are the risks? There are multiple risks associated. Okay, so multiple risk can be because of type of diabetes, whether you have type 1 diabetes or type 2 diabetes. So in type 1 diabetes, they are considered as a high risk group, although
there are a lot of studies which have shown that people with type 1 diabetes can also fast if they are fasting under medical supervision with all education and awareness and motivation. They can also fast. But type 1 are considered as a high risk group. Then it also depends upon the level of glycemic control, whether you are good, you have good control or you have a bad control. If you have bad control, you are going to get more complications while fasting as compared to those who have good glycemic control. Then it also depends, the risk also depends upon your medication, whether you are taking those drugs which can cause hypoglycemia, like sulfonylureas, like insulin. So these drugs can cause hypoglycemia, and you have to adjust the dose of those medications if you want to decrease the risk of fasting. And similarly, people may have, besides diabetes, they may have blood pressure, they may have cardiac disease, they may have renal disease. So you have to take into consideration those comorbidities as well while deciding whether your patient can fast safely or not. And then there are certain personal circumstances where your patient is living alone or nobody is there to look after him or her, and in that scenario you have to calculate the risk. So there are different risk factors, but all of these are not absolute risk, and you can manage these risk factors and you can modify these risk factors, and many of your patients can fast safely. So the key complications which we usually discuss the risk that can be there in patients who fast during Ramadan are diabetic ketoacidosis, hypoglycemia, hyperglycemia, dehydration, and thrombosis. So these are complications or risk that can occur in patients who fast during Ramadan. But with education, we have seen over the years, we are treating these patients over the years now, 20 years plus. We have seen that patients, when they are educated enough before Ramadan, they can the complications can be minimized significantly. And the data is coming more and more, and people are now fasting more safely without any complications. But it matters whether you have educated your patients before Ramadan, and how motivated they are and how they are following your guidelines. If they are following your guidelines, if they are compliant to your advice, then the complications can be minimized. And you can see that this is the CGM of continuous glucose monitoring profile of a healthy person before and after fasting and non-fasting state, and you can see a slight rise of sugar before iftar. But what happens in diabetic person? In a diabetic person, when he or she fasts, you can see the rise at iftar is really high as compared to a healthy person. You can see it was not so high, but it is higher in patients with diabetes. So they have more chances of getting hyperglycemia at iftar. And this is I think the first study, you can see a landmark study which has shown us clearly highlighted the facts that it was done in 12, 13 countries, Muslim countries, 12,000 people were involved, and it showed that 42.8% with type 1 and 78.7% with type 2 fasted for more than 15 days, and 2/3 of them received education before Ramazan. And lifestyle changes were changed only in half of the study population, and there was significant number of hypoglycemic episodes and hyperglycemic episodes. And it has this study it was a retrospective study, so of course it has a limitation, and it was the first study, but it has highlighted that many people were not properly educated before Ramadan, as it was a retrospective study. So of course it was not a prospective study, and
people didn't receive the full education before Ramadan, so they got complications. The doses were not adjusted in this study, and people were taking their doses as they were taking before Ramadan. So they were likely to get problems, and they got problems. And in that scenario, it was thought that fasting is causing all these problems. But in fact, fasting was not causing problems. It was lack of education, lack of monitoring, lack of lifestyle changes, lack of dose adjustments in drugs and medications, in insulin. So naturally, these people got complications. But we have shown in our study, which we have done and published in Diabetic Medicine, the prospective Ramadan prospective diabetes study, with where we have shown that people, if they are educated and if they are monitoring their sugars and if they have given full education, then many these complications can be fully minimized considerably. So, so you have to call your patients. Of course, the Ramzan is on now, but we say to our doctors that please bring your patient to your clinic. They have to visit your clinic at least 2 months before Ramadan. So you have to assess the risk beforehand, and you may be able to control the sugars. You'll be able to assess the risk if our patient has any risk. So we have to look into the type of diabetes. We have to look into the medications, whether we have to adjust the doses, whether we have to increase the doses, and we have to control the sugar profile. And then we have to look into the hypoglycemic risk, whether this person has any individual risk factor for getting hypos. So we have to look into that as well. And then we have to look into the complications and comorbidities, like we have to look into the cardiac status of a person. If somebody has cardiac disease along with diabetes, then we have to look into that. What is the status of the underlying cardiac disease? And then we have to check the renal functions, whether they are stable or not. In patients, of course, who have already renal disease, then we have to look into the stability of the renal profile. So this is also important. Then we have to look into the social circumstances of our patient. And then very importantly, we have to look into their previous Ramzan experience, whether they have fasted safely during their last Ramazan, or they got complications in the last Ramadan. If they fasted safely and during the year they didn't develop any complications, then perhaps they can fast safely this year as well. And the IDF-DAR has recognized three categories: category 1 with very high risk category, category 2 high risk category, and category 3 low to moderate risk categories. And you have certain group of people in very high risk category, like people having severe hypoglycemia within 3 months before Ramadan, and DKA before 3 months before Ramadan, hyperosmolar state, hypoglycemia unawareness, poorly controlled type 1, and like these people. And then we have a category 2 where we have poor glycemic control, people with poor glycemic control, well-controlled type 1 diabetes, type 2 diabetes on insulin therapy, and pregnant ladies, CKD stage 3, stable macrovascular disease, patient with other comorbidities, and people doing intense labor and treatment with drugs that may affect cognitive function. So these are people categorized into high risk group. And then there are people who are well controlled on lifestyle, metformin, acarbose, thiazolidinediones, second generation sulfonylureas, incretin based therapy, SGLT2 inhibitors, and basal insulin. So these are the people who can safely fast during Ramzan. But the people in the high risk category and the very high risk category, they have to be prepared before fasting. They have to counsel before fasting. They have to be educated before fasting. If they really want to fast, we have to tell them about the risk if they have any risk, and
if they still insist on fasting, then we have to educate them how to make it safer for them. Especially people with type 1 diabetes is very important to, so they should be very well motivated. They must be uh, ready to check their sugars during Ramadan, and they must be ready to control their sugar before Ramadan, and they must be fasting under your supervision. If under medical supervision they are fasting and they have all the facilities, then they can safely fast, because the data is accumulating. People with type 1 diabetes, especially on pump therapy, especially on basal bolus regime, they can fast. People who are elderly, they are also high risk category, and we have to take into consideration especially these people, and educate them very. They have to be educated. Extra time should be given to them for education. And similarly, pregnant ladies, in diabetic pregnant ladies, we recommend them not to fast during pregnancy, because in pregnancy they are on insulin. They would be very difficult, because the targets during pregnancy are very narrow, and we have to keep the sugars within a very narrow range. And in that scenario, they may get hypos, and that may be detrimental to baby or to mother as well. So in pregnant ladies, if they are on insulin or drug therapy as well, they should uh, we advise them not to fast while they are pregnant. They can fast after the delivery and after your in the normal other days. So education is the key thing that has to be done. The education is must, and we have shown several studies we have done and published and shown that people who are educated before Ramadan, they got lesser complication, and they follow the advice more than the people who were not educated. And we have also shown that no matter whether you are educating one-to-one, or whether you are educating in a classroom, or whether you are educating just by giving pamphlets or leaflets, uh, all work as compared to those who are not given education. So education is must, and in education you have to discuss about the risk of if they have any risk, and we have to talk about, and of course if there are benefits of fasting. Everybody knows there are benefits of fasting as well, so we have to explain the benefits as well to those who want to know about benefits. There are certain benefits, and literature is now full of benefits of intermittent fasting. A lot of people are fasting all over the world, not only Muslims, but non-Muslims are also fasting because of weight reduction as a modality for weight reduction. People are fasting, and a lot of literature is accumulating. So we can discuss about risk and benefits, and then monitoring. About monitoring, it's important, and people have this misbelief or myth that this will break the fast, and we have to remove this misconception that monitoring can break the fast. It does not invalidate the fast. So we have to give our patient this education that monitoring does not invalidate the fast. And similarly, for medication, we have to adjust the doses of medication. During Ramadan, they have to take medications differently, not as they were taking before Ramadan. Nutrition is important, and exercise is also important. So 6 to 8 weeks before Ramadan is required. They have to be seen in that period. And then we have to talk about the SMBG, and we have to especially talk about when they have to break the fast. So they have to break the fast at certain levels of blood sugars. So they have to be educated that they have to break the fast in certain situation if God forbid that occurs. So they have to monitor the sugars several times during the day, pre-sahur, like before sahri, in the morning, midday, mid-afternoon, pre-sunset meal, that is before iftar, and after 2 hours after iftar.
And those people who cannot afford to do so many monitoring, we can tell them that at least at the time of symptoms of hypoglycemia, they have to check their sugar. At least that time is mandatory. They have to check their sugars. And I usually ask my patients that they have to, first 3 days uh, during Ramazan, they have to follow their glycemic profile. They have to check sugars after sahur, at midday and before iftar, and up 2 hours after iftar, and then before sahur. So 5 readings per day for 3 days, 15 readings. They will come to know about their glycemic profile uh, during the day as well as during the night. And we say that, okay, during the day, if their targets are slightly relaxed to prevent hypoglycemia, and the targets during the night are tightened to prevent hyperglycemia. So prevent hypoglycemia during the day and prevent hyperglycemia during the night. And we have sent this study we have done already, where we have keep these targets, looser targets during the day and tighter targets during the night, and the overall glycemic control improved and not worsened during Ramadan. And these are the targets when they have to break the fast. When they drop their blood sugar below 70 any time during the day, they have to break the fast because it's a very low sugar. Regarding higher sugars, of course, if they are not symptomatic, if they have more than 300 and not symptomatic, they can continue the fast. But if they are symptomatic, getting hyperglycemic symptoms, polyuria, polydipsia, and abdominal pain, vomiting, all of this, then and dehydration, all of this, they have to break the fast then. And then in the education, many people don't know what are the features of hypoglycemia, what are the symptoms of hypoglycemia. We have to explain to them the symptoms of hypoglycemia and the symptoms of hyperglycemia, because during Ramadan, everybody who fast feels somewhat weakness. Some weakness is there to everybody. So they have to really understand what are the symptoms of hypoglycemia and what are the symptoms of hyperglycemia. So if they get these symptoms, they have to check their sugars and then do appropriately what they have been told before Ramadan. Dietary advice is important, and I think there will be a whole lecture of diet. In the next lecture will be by Rabia, and she will be discussing all about diet. But in short, 40 to 50% from carbohydrates, around 30% from protein, and around less than 35% from fat is advisable. Low glycemic index food is advisable. Vegetable fruits are advisable. Saturated fat should be minimized. Caffeine, tea, and sweetened drinks and desserts should be avoided. Hydration is very important because these are summer days, and people in hot summer days you get dehydrated. So hydration at before, after iftar, and before sahur, in between the time where you are eating and drinking, you have to take a lot of fluids to compensate for dehydration that has occurred during the day. So calories must be divided into sahur, iftar, and some snacks and the dinner. And I think Rabia will discuss the weight gain should be avoided during Ramazan. And we have published a study where we have looked into people who have followed the dietary advice. They have lost weight during Ramadan, and those who didn't follow the dietary advice, they in fact gain weight during Ramadan. So Ramadan is the ideal season where you can try to lose your weight. And many people with diabetes are overweight and obese. They have to take this opportunity as an opportunity to reduce their weights. And these are 10 principles of Ramadan nutritional plan. And I have discussed some of it. And I think Rabia will concentrate on this. So I will leave this. Then people on insulin, we have seen that people on insulin, the analogs insulin are more safer than the human insulin. And similarly, the premix insulins are safer than the other insulins.
and the drugs dosage and insulin dosage must be adjusted before Ramadan. So type 1 people, especially with a history of recurrent hypoglycemia unawareness, poor glycemic control, brittle diabetes, uh, non-compliance with medical treatment, and unwilling to monitor their blood glucose. These are people among type 1 diabetes who are at particularly more risk. So these should be asked not to fast if they have all of this. So they have to be educated and controlled and before allowed to fast. Now, how to adjust the doses during Ramadan? Just quickly, uh, you have metformin. So if you are taking metformin morning and evening, it will be shifted to Seher and Iftar. If you are taking Acabo, similarly, Seher and Iftar. If you are taking DPP4 morning, you will shift it to Iftar. If you are taking PCDs, it will be shifted to Iftar. And if you are taking SGLT2 inhibitors, they are also taken in the morning, will be shifted to Iftar. So all of these drugs, they don't cause hypoglycemia if they are given in combination or as a monotherapy. They just have to change the timings of the medication, don't have to adjust the dose. But in sulfonylurea, you have to, if they are taking morning dose, it has to be shifted to iftar. And in well-controlled patient, it should be reduced to 75% of the actual dose. If they are poorly controlled, not well controlled, then they can be given full dose. If they are taking BD dose, morning dose will be shifted to iftar, and in well-controlled patient will be reduced to 75%. Evening dose will be taken at sahur and will be halved. But I prefer sulfonylureas in OD doses are better as compared to BD doses, and many of the newer sulfonylureas are available in OD doses. So you can give in OD doses at iftar. In well-controlled patient, you have to reduce the dose. And people on premix insulins, again, morning dose will be shifted to iftar, evening dose will be taken at sahur. Sahur dose will be halved, but the evening dose, the morning dose, which has been shifted to iftar, will be reduced in patients who are well controlled, like HbA1c of 6.5 or 7. You have to reduce the dose slightly to 75% initially and adjust accordingly. Similarly, in R and N people, the pre-mix insulins will be shifted to iftar morning dose, and evening dose will be shifted to sahur. Sahur dose will be halved. Evening dose, the iftar dose, the short-acting insulin will be given full dose, while the long-acting insulin or intermediate-acting insulin will be reduced to 75% of the actual dose. So individualization is the main thing I want to say, that each patient is different, so you don't have to see into the categories as such, but take your patient as a single person, as an individual, where you have to take into consideration the risk if he has, and decide about the management plan, and decide about the educate about all of the things which we have discussed. During Ramadan also, they have to follow the nutrition plan, they have to monitor the sugars, they have to take in the dose according to the advice given to them, and very importantly, after Ramadan, because many people continue to take their medications as prescribed during Ramadan, and they are taking the same dose and timings, and they get problems. So in post-Ramadan period, they have to come back again to the same regime which they were taking before Ramadan, and they have to monitor again, because during Eid festival and during the days after Ramadan, people get hyperglycemia because of overeating and not dieting properly. So I thank you for your attention. If you have Thank you any very much. questions, you can ask. Ji sir, thank you very much for a very comprehensive and discussion regarding the diabetes and Ramadan टॉपिक. एक क्वेश्चन हमारे पास आया है सर डॉक्टर कम्युनिटी से, जिसमें पूछा गया कि रमज़ान में एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स का इस्तेमाल करना बेहतर है. कोई हर्ज नहीं है एक्सटेंडेड रिलीज में, जैसे मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज में आती है, वो दे सकते हैं, हम इफ्तार पे दे देंगे. इसी तरह ग्लीक्लाजाइड एमआर है, वो भी इसी तरह के उसकी फॉर्मुलेशन है, तो वो भी आप इफ्तार पे दे सकते हैं.
तो एक्सटेंडेड रिलीज जो भी दवाएं हैं अवेलेबल जितनी भी हैं, जी अक्सर दवाएं एक्सटेंडेड रिलीज आ रही हैं, तो उनको आप बिल्कुल। एक टाइम इफ्तार पे दे सकते सर एक व्यूअर्स की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि एक आम आदमी मतलब लेमैन को किस तरह पता लगता है कि डिहाइड्रेशन उसे हो रही है, और अगर उसे पता चल जाए डिहाइड्रेशन का तो फर्स्ट क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे जो उसे फ़ौरन लेने चाहिए? हैं। अव्वल ज़ाहिर है कि ये एक्सपोजर की भी बात है कि जो लेबर्स हैं या जो मजदूर तबका है वो बाहर गर्मी में अगर धूप में काम कर रहा है, गर्मियां ज्यादा हैं, तो पसीना उसको ज्यादा आएगा, उसका मुंह खुश्क हो रहा होगा, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, उसको पेशाब कम आएगा, उसको तो ये सारी चीजें अलामत होंगी कि इसको मुंह खुश्क हो रहा है और प्यास ज्यादा लग रही है नहीं। और पेशाब कम आ रहा है। तो ये सारी अलामत कुछ इसके नजर आएंगी जिसकी वजह से वो सोच सकता है कि उसको पानी की कमी वाकई हो रही है। वाकई। सर ये एक क्वेश्चन है कि जो आपको पता है कि न्यूली लॉन्च SGLT2 क्लास है SGLT2 इनहिबिटर्स में, तो उसमें कहा गया है कि एम्पाग्लिफ्लोजिन भी है, तो उसका यूज़ जो है वो शुगर के कंट्रोल को किस तरह बेहतर बना रहा है, और क्या डायबिटीज और रमज़ान में क्या खास करके आप उसको क्या सजेशन है आपकी? SGLT2 इनहिबिटर्स बहुत अच्छी क्लास लेटली इंट्रोड्यूस हुई है, मेरे ख्याल से 1 साल तकरीबन हो रहा है बिल्कुल। कि एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन और ये ग्रुप आया है और बहुत अच्छी एक चेंज हमारी ट्रीटमेंट के अंदर हमें मिला है, जो कि सालों से नहीं मिला था। ये बहुत ज्यादा शिफ्ट हुई है हमारी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इसकी वजह से। बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन इसको हम रमजान के अंदर इंट्रोड्यूस करना ज्यादा अच्छा नहीं समझते कि उस वक्त इंट्रोड्यूस करें जब आपके पास अब रमजान में पेशेंट कोई आ रहा है और आप इंट्रोड्यूस करें। हाँ, पेशेंट को पहले से आप इंट्रोड्यूस कर दें, रमजान से 2 दिन पहले से अगर आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो पेशेंट उससे ट्यून्ड हो जाता है। अब चूंकि रमजान में गर्मी भी पड़ रही है, फिर इससे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होती है, पेशाब के साथ पानी भी निकल जाता है जिस्म का, तो इसलिए जो है वो स्टडीज तो हैं इस पे, अब कुछ स्टडीज आ गई हैं SGLT2 पे कि बिल्कुल। वो सेफ हैं, लेकिन जैसे कुछ स्टडीज हैं जो मिडिल ईस्ट में की गई जहाँ लोग ज्यादा बाहर नहीं होते, एसीज में होते हैं, अपने रूम्स में रहते हैं, उनको अच्छा एक्सपोजर गर्मी का नहीं होता, तो वो शायद सेफ्टी रख भी लें। लेकिन अब हमारी एरिया, हमारी इलाके में देखें तो लोग जो बाहर रहते हैं, ज्यादा एक्सपोजर हीट का होता है, तो उनके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सूटेबल ना हो। लेकिन जनरली जो स्टडीज हुई हैं वो इसकी सेफ्टी बताती हैं। इसमें ख्याल ये करना चाहिए कि जो इस ये ग्रुप है इसको सहरी पे अगर ना इस्तेमाल किया जाए बल्कि इफ्तार पे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन एक इसका साइड इफेक्ट तो है कि डिहाइड्रेशन कर सकती है और प्यास लगा सकती है, थर्स्ट इंक्रीज हो सकती है। तो इसके इसलिए इसको इफ्तार पे दिया जाए और सहरी पे ना दिया जाए। और पानी का इस्तेमाल फिर इफ्तार से लेकर सहरी पे, वैसे भी हम कहते हैं डायबिटिक के मरीज, डायबिटीज के मरीजों को कि वो पानी का खूब इस्तेमाल इफ्तार में से लेकर सहरी तक वक्फे वक्फे से करें, एक साथ ना पी लें बल्कि वक्फे वक्फे से करें, ताकि पानी की जो कमी दिन में हो गई वो पूरी हो जाए। ठीक है सर। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं जितनी भी मतलब कॉन्फ्रेंसेज आपकी भी जो लास्ट मैंने अटेंड की थी उसमें ये हमेशा से ये आया है सवाल, और इसमें ये आता है कि सर क्या डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रख सकता है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया है। डायबिटीज का मरीज रोजा रख सकता है, ये सारे वेबिनार्स और ये कॉन्फ्रेंसेस ये सब इसीलिए मुनक्कद की जा रही हैं कि डायबिटीज के मरीज रोजे रख सकते हैं। और बस ये है कि इसमें डॉक्टर्स की ज्यादा जिम्मेदारी है, मरीजों की तो है ही अपनी जिम्मेदारी, जाहिर है उनको मर्ज है तो वो अपने मर्ज की जान पहचान की करें, मर्ज के बारे में नॉलेज हासिल करें, और उनको अगर रोजा रखना है तो अपने मालिज से मशवरा करें। लेकिन डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो मरीज को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे, उसके लिए जो बेहतर समझे उसको एडवाइस करे। और अक्सर मरीज
अगर थोड़े एजुकेशन दी जाए तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। डॉक्टर्स इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते कि भाई आपको शुगर है तो आप रोजाना रखें, ये बात सही नहीं होगी। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मरीज की असेसमेंट करे, मरीज के रिस्क फैक्टर्स को देखे, अगर उसको वाकई रिस्क है तो उसको रिस्क बताएं, अगर रिस्क नहीं है तो फिर उसको रोजा रखने पे उसको फायदे भी बताएं कि भाई इसमें फायदा भी है। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डायबिटिक के मरीज कुछ अक्सर मरीज रख भी सकते हैं रोजा, लेकिन जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं और जिनके अंदर आपको लगता है कि रोजा रखने से उनकी रिस्क बढ़ जाएगा तो मना भी करना चाहिए। जैसे किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, जैसे किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, जैसे किसी को नमोनिया हो गया, जैसे किसी को इस तरह की कोई बीमारी एक्यूट इलनेस हो गई तो उसमें तो मना ही करते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को हम मना करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को, हर मरीज को अलग अलग देखना होता है। तो आपको देखना है कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, अगर उनको रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको रिस्क है तो उनको रिस्क बताना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर ये कुछ क्वेश्चन थे। Now, I request Ms. Rabia Imtiaz, as I already introduced her. She is a senior clinical dietitian in White, and Ms. Rabia will further elaborate the do's and don'ts of Sehri and Iftar for diabetic patients, with reference of the book Ramadan, Giza or Diabetes, which was recently launched by Dark Conference 2020. I request Ms. Rabia Imtiaz to chair the session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rabia Imtiaz and I'm currently at White. The topic we are going to discuss today is do's and don'ts of suhoor and iftar. Basically, what is Ramzan about? It is about fasting. Individuals refrain from consuming food or water from dawn till sunset. What are the benefits of fasting? बात ये होती है कि हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं क्या वो रमज़ान में फ़ास्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो इसको सेफ़ रखें। सेफ़ किस तरह रख सकते हैं? इस तरह रख सकते हैं कि वो अपनी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल रखें। कंट्रोल किस तरह मुमकिन है? हमारा जो हम इंटेक ले रहे होते हैं विया फूड और ड्रिंक्स, तो वो हमारे जो है हेल्दी होने चाहिए। इससे ही हमें बेनिफिट्स मिलेंगे फ़ास्टिंग के। क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं फ़ास्टिंग के? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं कि उसमें हमारा ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में आ जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में होगा तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वो प्रॉपर हो रही होगी। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट हो जाता है। वो इस तरह बूस्ट हो जाता है कि हमने हेल्दी ईटिंग की, हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में थी, उसके बाद हमने जब ब्रेक किया फास्ट को, हमने इफ्तार किया, तो हमने अच्छी डाइट ली, हमने हेल्दी डाइट ली, हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिए, हमने फ्रूट्स का इंटेक किया। तो इससे हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जिसको हम आम ज़बान में इम्यून सिस्टम को जो हम कहते हैं, तो वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो बहुत बूस्ट कर जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है आम दिनों से। How fasting is in Ramadan is different from intermittent fasting. Fasting in Ramadan is a type of intermittent fasting as well. हमारा जो eating pattern है वो different हो जाता है। हम फास्टिंग कर रहे होते हैं फिर खा रहे होते हैं, यानी कि इस पे स्विच कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, कि जैसे कि हमने 5:2 डाइट पे हम चले गए, कि हमने 5 दिन जो है नॉर्मल डाइट पे हम रहे, नॉर्मल ईटिंग पैटर्न हमारा रहा, लेकिन हमने 2 डेज़ जो है हमने फास्टिंग की। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग में और भी चीज़ें, और भी जो टाइप्स होती हैं वो ये होती हैं, 16:8 के रेशियो से हमने किया कि 16 आवर्स की हमने जो है फास्टिंग की और 8 आवर्स हमने जो है अपना नॉर्मल रूटीन ईटिंग जो है वो की। रमज़ान की फ़ास्टिंग किस तरह डिफरेंट है इससे? वो इस तरह डिफरेंट है कि हम इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग में वी आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर, बट इन रमज़ान हमारे पास वी आर नॉट कंज्यूमिंग वाटर एज वेल फॉर अबाउट 15 to 16 आवर्स और 12 आवर्स। हर डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट है। So, do we really fast or is that feasting? पाकिस्तानीज हम अपनी बात करें अगर, तो वी डू नॉट फास्ट, वी फास्ट फॉर फीस्टिंग। हमारे पास जो हमारा लेविश इफ्तार्स होते हैं, हमारे सहूर में हमारी खजला पीनी, डीप फ्राइड आइटम्स हमारे होते हैं जो कि हम यूजुअली कंज्यूम कर रहे होते हैं। हमारे पास समोसा पकौड़ा दैट आर कंपलसरी इन आवर इफ्तार। इसके अलावा हमारी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं। तो
दिस इज़ नॉट फास्टिंग। हमने फास्टिंग की, हम भूखे रहे बहुत टाइम लंबे आवर्स तक, लेकिन फिर जब हमने फर्स्ट मील अपना लिया तो दैट वाज वेरी लैविश, दैट टर्न इनटू फीस्टिंग। Starting with suhoor, what we do in suhoor, usually the most prominent thing that we do not we skip sahri. Usually individuals do not consume sahri, so this is not actually good. We should do sahri and we should eat healthy because we have to fast for several hours then ना। तो हमारा जो लास्ट मील होता है, अगर हमने सहरी नहीं की तो हमारा जो लास्ट मील है उसी से फिर हमारी फास्टिंग स्टेट स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो क्या होता है कि वो हमारी रिजल्ट करती है डिहाइड्रेशन में, हमारी वीकनेस हमें हो जाती है उससे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो होती है बहुत कम हो चुकी होती है। लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हमें लिथार्जिक हमारी बॉडी हो रही होती है, या फिर जो है हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही होती है। और फिर ये समर्स हैं तो हमें और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से हेडेक वगैरह भी कॉज कर सकती है। अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम सहरी में चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, हम ये चीज़ें ले रहे होते हैं, जो कि हम नहीं अलाउ करते। हमने डायबिटिक्स को नहीं अलाउ करते, नॉर्मली भी हम किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करते हैं कि वो कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक करें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स आर वर्क एज अ डायूरेटिक बेसिकली, तो हमारी बॉडी से जो है वो पानी निकाल रही है, तो इस हम जिसकी वजह से हमें यूरिनेशन अकर होती है। तो ये होता है कि हमारा कैफिनेटेड ड्रिंक से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है। सेकेंडली क्या हो रहा होता है हमारी बॉडी के साथ कि हमने जब कोई भी हमने इंटेक लिया इफ्तार में, लाइक हमने रोटी के साथ हमने कोई भी मीट का इंटेक किया, या फिर हमने कुछ भी एग का इंटेक किया, तो कैफीन की वजह से हमारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होने देती फिर वो। तो इसलिए गुड प्रैक्टिस ये होती है कि हम कोई फ्रूट शेक ले लें, उसमें शुगर ऐड ना करें। और इसके अलावा हम लस्सी ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, क्योंकि दे आर रिच इन वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट अच्छा होगा तो हमारी आगे हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हमारी बहुत देर तक हम जो है स्मूथली जा रहे होंगे। और डायबिटिक्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, तो इसलिए हम उनके मील में ये चीज़ लाजमी रखते हैं कि आपने दूध, दही या लस्सी में से या फ्रूट शेक में से कोई चीज़ ज़रूर लेनी है। इसके अलावा कंज्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब इसकी क्या वजह होती है, मैंने डिफरेंट मेन्यूज़, आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज़ शो किए हैं, तो उसमें पहला मेन्यू मेरे जैसे खागीना है, यूजुअली जो ये एक अंडे का बना हुआ खागीना, साथ में रोटी, मिल्क। सेकंड मेन्यू में है हमारे पास मीट करी, योगर्ट, रोटी। थर्ड मेन्यू में हमारे पास है कीमा पराठा, फ्रूट शेक। क्या चीज़ है, इन तीनों चीज़ों में हमारे पास योगर्ट भी है, हमारे पास मिल्क भी है, हमारे पास फ्रूट शेक भी है। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि हर चीज़ में ऑयल का भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट मौजूद है। तो हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लेते हैं तो एक तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है बहुत टाइम तक, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बट इफ़ यू आर टेकिंग होल व्हीट तो वो कंपैरेटिवली रिफाइंड कार्ब्स के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो देर से डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इसको प्रोटीन के साथ ले रहे हैं तो वो और स्लो डाउन कर देगा उसकी मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा स्लो डाउन कर देगा, स्टाइट की रहेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी बहुत टाइम तक, फिर हमारी शुगर्स पे असरअंदाज नहीं होगी ये। Thirdly, deep fried food, give them a miss. बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटिक्स के वेट की वजह से। वेट बढ़ जाएगा तो सीवीटी कॉज कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती, हार्ट की मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि भाई आपने ज़्यादा जो है सेचुरेटेड फैट, तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू कंज्यूम इट, लेकिन जो गुड फैट है जो हमारे पास ड्राई फ्रूट से आ रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसका कंजम्पशन रखना है। या अगर हम कैनोला ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, जो आपके डाइटिशियंस ने या आपको डॉक्टर्स ने जो एडवाइस किया है उतनी ही क्वांटिटी में करना है। लेकिन अगर आप उसका एक्सेस करेंगे, आपने घी में बने हुए खजला पीनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली, कराची पाकिस्तान, हमारी प्रैक्टिस रहती है कि हम सहरी में खजला पीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फर्स्टली दे आर रिफाइंड कार्ब्स,
फिर वो डीप फ्राइड होते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में बने हुए होते हैं, फिर उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑयल की कंजम्पशन बढ़ रही है। एक तो हमारी तबीयत में भी फिर अगर हम इसको आम अल्फाज में कहें तो बोझलपना रहता है, और हमारी जो है ये लेटर ऑन हमें इसका जल्दी जो है हमारा ये हज़म भी हो जाता है क्योंकि रिफाइंड होता है। फिर हमारी जो हार्ट की डिजीज़ हैं उसको कॉज करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, हमारे टीजीज़ को रेज़ कर देता है ड्यू टू रिफाइंड, बिकॉज ऑफ द रिफाइंड कार्ब्स। इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स इफ्तार, ब्रेक इट विद अ डेट। हमारा पास यूजुअली ये नॉर्म है कि आपने जो है खजूर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो डायबिटिक्स हैं दे कैन नॉट कंज्यूम डेट, क्योंकि जो है उसका, क्योंकि वो बहुत मिठास होती है उसमें। उसकी मिठास का रीज़न है, हमारे जो डेट्स होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है विच इज़ ट्वाइस एज स्वीट एज ग्लूकोज, तो इसलिए उसकी मिठास ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। बेसिकली इट इज़ अ सुन्ना एंड वी शुड कंज्यूम इट बट इन एडिक्वेट अमाउंट। हमारे पास जो डेट्स होते हैं उसमें फ़ाइबर भी बहुत अच्छे, फ़ाइबर 0.6 ग्राम्स में पाया जाता है, कार्ब्स में 5.3 होते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, पिक्चर में क्लियर होगा। और एक डेट हमें जो है 20 कैलोरीज दे रहा होता है। लेकिन जितने टाइम जो है कहते हैं कि हमारे पास जो डेट्स होते हैं दे आर लो, दे हैव लो ग्लाइसेमिक लेवल, लेकिन वो उस टाइम पे होता है जब उसमें से जो है वाटर कंटेंट, जब वो राइपन होता जाता है और इसका वाटर कंटेंट कम होता जाता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कम होता जाता है। लेकिन यूजुअली हम जो डेट कंज्यूम कर रहे होते हैं दैट इज सेजल, जिसमें जिसमें वो फ्रेशली राइपन होता है, जिसमें जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो वी अलाउड कि आप एक डेट या 2 डेट जो है कंज्यूम कर सकते हैं along with the other iftar items. Avoid drinks with excess sugar. Obviously, we do not allow any sugary drinks. वैसे भी शुगरी ड्रिंक्स का बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। इसके अलावा दे रिटेन वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एंड शुगरी ड्रिंक, अगर आपका फर्स्ट मील जो हमारी फास्टिंग स्टेट के बाद आपका फर्स्ट मील जो है शुगरी ड्रिंक्स होगा, दैट विल क्रिएट ब्लॉटिंग एंड अल्सर्स एज वेल। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूजुअली लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर अ बॉडी। कि आपने जो है फास्टिंग स्टेट से फ़ौरन ही आप जब जो है मील का टाइम जब आपका आया, जब आपकी बॉडी वैसे ही स्लो डाउन हुई थी, मेटाबॉलिज्म इसका स्लो डाउन हुआ था, वो फास्टिंग स्टेट में थी, और आपने फिर शुगरी ड्रिंक्स ले ली या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले ली, तो इट विल लीड टू रिफाइनमेंट ऑफ वाटर एंड इट विल क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट्स। और फिर आपकी शुगर लेवल पे, अगर हम इसका इन कॉन्टेक्स्ट टू डायबिटिक पेशेंट बात करें, तो फिर आपके शुगर लेवल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, आपकी शुगर बढ़ी हुई आएगी फिर, तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। ईट फाइबर रिच फूड्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में पिक्चर में क्लियर है कि मैंने इसमें दिया हुआ है, फ्रूट्स हैं, दही बड़े, छोले, ये यूजुअली हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम खा रहे होते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी अलाउ, बट इन एडिक्वेट अमाउंट बिकॉज दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट आपको जितना रिकमेंड किया गया है उससे ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो दैट विल इफ़ेक्ट योर शुगर्स। तो इसमें हमने सारे ही जो फाइबर्स की चॉइसेस दी हैं, दे आर रिच इन फाइबर्स, यानी कि दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स हो गया, दही बड़े हो गया, दैट आर मेड ऑफ लेंटिल्स एंड योगर्ट, एंड इसके अलावा जो हमारे पास छोले हैं, ब्लैक हों वाइट हों, यू कैन कंज्यूम दैट बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर रिच इन फाइबर। तो बेसिकली हमें अपने इफ्तार में वो चीज़ें कंज्यूम करनी है जो फाइबर रिच हों, ना कि वो चीज़ें जिसमें एक्सेस ऑयल हो, जो तली हुई अशिया हैं जिसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि वी ऐड सॉल्ट एंड शुगर इन आर फ्रूट चाट एज वेल टू इन्हांस इट फ्लेवर। लेकिन हमारा हमारा ये मानना है कि हमें जो है ये चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाई सॉल्ट इनटेक कैन आल्सो रिजल्ट इन एज अ डाययूरेटिक इफेक्ट एंड इट विल टेक आउट द वाटर फ्रॉम योर बॉडी। स्वैप द फ्रायर विद द ग्रिलर। हमारी प्रैक्टिसेस हैं कि हम समोसे, पकोड़े, और ये हमारे पास
रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं, हमारी जो टेबल्स हैं वो इस चीज़ से भरी हुई होती हैं माशाल्लाह, कि हम कंज्यूम जो कर रहे हैं वो है समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, और दही, ये हमारा, इसके अलावा जो है मीठी टिक्कियाँ हो गई हमारी। तो हम, व्हाई नॉट वी हैव अ बेटर चॉइसेस, आप उसको चेंज कर लें। वी कैन हैव सैंडविचेस, वी कैन हैव चिकन सैंडविचेस, हम उसको ग्रिल करके ले सकते हैं, हम उसको बेक करके ले सकते हैं। वी कैन हैव थिन स्लाइस पिज़्ज़ाज एज वेल, अगर हम अच्छी क्वालिटी की, हम जो है लो फैट हमने चीज़ का इस्तेमाल किया, हम उससे जो है पिज़्ज़ा बना सकते हैं। उसमें हमने वेजिटेबल्स डाली, रिच करके, उसमें रिच कंटेंट ऑफ वेजिटेबल्स हमने डाल दिया, या हमने बेक कर लिया, हमने जैसे कबाब बेक कर लिए, हमने चिकन को बेक कर लिया, उसके साथ हमने होल व्हीट के बन्स ले लिए। तो दे ऑल आर रिच इन फाइबर एंड दे हैव लो अमाउंट ऑफ ऑयल, तो दैट इज़ गुड फॉर अस। इसके अलावा क्या हो रहा होता है कि जब हम ये चीज़ों, जब हमारा फर्स्ट मील, जो हम फास्टिंग की स्टेट से हम जो फीस्टिंग पे आते हैं, यानी कि फीस्टिंग कर रहे होते हैं, यूजुअली जब हम फर्स्ट मील अपना ले रहे होते हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हुआ हुआ होता है। लेकिन जब हम एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज हमारे पास आ रहा होता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास सिंपल सोर्स है ग्लूकोज की, तो जब हम एक्सेस लेंगे तो वो एक्सेस जाके स्टोर हो जाएगा लिवर एंड मसल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन कहलाती है। तो फिर जब ये एडअप होता जाता है हमारी बॉडी में, पहले तो यूज़ हो गया, यूटिलाइज हो गया, जितनी बॉडी को नीड थी ग्लूकोज की वो यूटिलाइज हो गई, देन उसने स्टोर कर लिया इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, देन अब जो बचा था वो एक्सेस फैट के फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट हो रहा है एडिपोज टिश्यूज में, तो दैट क्रिएट ओबेसिटी। फिर हमारी जो है रमज़ान में हम यूजुअली वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन वो रिजल्ट करती है ओबेसिटी में, वेट गेन में रिजल्ट करती है, और वो इसी वजह से होता है कि वी कंज्यूम एक्सेस ऑयल प्रोडक्ट्स। To sum up, moderation is the key. Obviously, Pakistanis, we cannot stay away from carbohydrates, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड है, हमारा स्टेपल फूड इज़ रोटी एंड चावल। तो हम जो है रोटी चावल के बगैर नहीं रह सकते, एंड वी, आप अगर रह भी जाएं, मोस्ट प्रॉब्ली आजकल जो हमारी डाइट आई हुई है कीटोजेनिक डाइट, बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ चल रहा है एंड पीपल आर डूइंग इट, लेकिन वो एक लॉन्ग पीरियड में यू कैन नॉट गो विद इट। आप एक शॉर्ट पीरियड में उसको कर सकते हैं, लेकिन हमने बाद में जाके रोटी चावल खाना ही है, तो फिर उसका जब बॉडी को आदत ही नहीं रही वो कंज्यूम करने की, तो फिर और ज़्यादा वो आपके जो है एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मॉडरेशन रखें। आपने अगर रोल भी खाना है, आपने अगर समोसा भी खाना है इफ्तार में, ये एक तो ये कि आप रेगुलर ना खाएं, चॉइसेस रखें। एक दिन हमने सैंडविचेस बना लिए, तो एक दिन हमने फ्रूट चाट या सैंडविचेस रख लिया, एक दिन हमने पकोड़े बना लिए, उसके साथ हमने फ्रूट काट के रख लिया। इसके अलावा हमारी जो है जो ड्रिंक्स आप देख रहे हैं, ये हमने अपने सेंटर में, डायबिटीज़ सेंटर बकाई में ही बनाई हैं, जो कि इन रिफ्रेशर्स के नाम से हैं, और ये इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज हैं, तो दे यू कैन कंज्यूम दिस एज वेल। इसके अलावा हमने इसमें रोल भी रखा है, हाफ रोल, एक स्मॉल जो है पीस ऑफ रोल आप ले सकते हैं, या एक थिन पेटी का जो है आप समोसा ले सकते हैं। अगर आप इसको गौर करें तो मैंने इसमें समोसा, कीमा समोसा रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इसकी पेटी बहुत थिन होती है, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में जा रहा है, साथ में हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब कर दिया, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो दे विल रिलीज स्लोली, तो इसलिए हमारी शुगर लेवल पे असरअंदाज नहीं होगा इतना। और फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई आपने एडिक्वेट अमाउंट लेनी है, आपने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेके देन लेटर ऑन आप 3 आवर्स के बाद थोड़ा सा मिकदार में दूध ले लें, या फिर आप अपना एक मील और ले सकते हैं, दैट इज़ डिनर, जिसमें आप 1 और हाफ रोटी या 1 और हाफ प्लेट राइस लेके, आपने जो भी घर में दाल चावल, दाल हो गई, सालन हो गया, सैलड उसके साथ आपने मस्ट रखा, कि वो आपकी जो है स्टाइटी क्रिएट करेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट करेगी, और फिर आपके शुगर लेवल पे भी एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगी। तो मॉडरेशन इज़ द की। लास्टली, इस साल हमारे पास रमज़ान हज स्टडी ग्रुप ने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है रमज़ान मील बुक। उसका बेसिकली पर्पस ये था कि हम अपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको उनकी सेफ फास्टिंग में उनको हेल्प कर सकें। इस बुक में को बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि हम सेफ फास्टिंग करवा सकें, चाहे वो डायबिटिक्स हैं या चाहे वो नॉन डायबिटिक्स हैं। इफ़ दे आर नॉन डायबिटिक्स, दे कैन लूज वेट थ्रू दिस बुक,
or if they are diabetic, they can control their blood sugar level from by following this book, by following the meal plans of this book. इसमें बेसिकली हमने चार कैलोरीज वाइज हमने डिवाइड किया है इसको, हमने 15 मेन्यूज डिज़ाइन किया इसमें, जिसमें हमने हर मेन्यू को 4 टाइप ऑफ कैलोरीज में डिवाइड कर दिया। जो हमारे सारे 15 मेन्यूज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ कैलोरीज, दैट इज 1200, 1500, 1800 एंड 2000। इसमें अकॉर्डिंग टू योर हाइट और वेट, डार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो RNP उनका रमदान मील न्यूट्रिशन प्लान है, रमदान न्यूट्रिशन प्लान, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है कि भाई अगर आप इतने हाइट है आपकी, आप अगर जेंडर आपका जो मेल है, इफ़ यू आर फीमेल, तो आपने अपनी हाइट वेट के हिसाब से या आपकी डाइटिशियन जो आपको रिकमेंड कर रही है जितनी कैलोरीज, उसके हिसाब से आपने जो मेन्यूज़ हैं उसका सिर्फ वही पोर्शन खोलेंगे आप जो आपको एडवाइस किया गया है। यानी कि इफ़ यू आर एडवाइज टू कंज्यूम 1800 कैलोरीज थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमदान, तो आपने सिर्फ 1800 वाला पेज खोल के देन यू विल फॉलो ऑल द मेन्यूज दैट आर इन 1800 क्वांटिटी। तो हम इसको करके हमने क्या चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इसका रिजल्ट ये मोस्ट प्रॉब्ली आएगा अगर लोग इसको फॉलो करें, कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाते हैं, 1500 कैलोरीज पे आ जाते हैं या 1200 कैलोरीज पे आ जाते हैं, तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा एट द एंड हमने इस बुक में 4 रिफ्रेशर्स की रेसिपी भी दी है, कि उस रिफ्रेशर की रेसिपी जो कि हमने रमज़ानों में ही जो हमने बकाई में ही रमज़ान हज स्टडी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से बनाई थी, उसको हमने इसमें डाला है। वो 4 रेसिपीज़ कैलोरीज़ में बहुत कम है। अगर उन मशरूबात को आप छान के पिएंगे तो वो आपको एक तो फ्लेवर उसका बहुत अच्छा है, और अगर आप उसको ठंडा पी रहे हैं तो एक आपका वाटर कंटेंट, क्योंकि वो शुगरी नहीं है तो वाटर कंटेंट उसका अच्छा है, बहुत बेहतर है। आप उसको कंज्यूम कर रहे होंगे तो उसके आप 2 से 3 ग्लास भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी शुगर पे असरअंदाज नहीं होगी जो शुगरी ड्रिंक्स असरअंदाज होती हैं उसके मुकाबले में। इसके अलावा हमने जो 4 रिफ्रेशर्स की रेसिपीज़ है वो हमने इस बुक में डाल के, साथ में हमने आखिरी के पेज पे एक पूरे फ्रूट्स की लिस्ट दी हुई है। हमने फ्रूट्स की जो एक सिंगल सर्विंग होती है वो दिए हुए, कि अगर हमने अपने मेन्यू में लिखा है दैट यू हैव टू कंज्यूम, एक फल हमने लिखा है कि भाई आपने इसके साथ एक फल कंज्यूम करना है, तो दैट कैन बी एनी फ्रूट, बस आपने अपनी वहाँ से जाके लास्ट पेज से सिर्फ उसकी सर्विंग साइज़ देख के उसको कंज्यूम कर लेना है। या अगर हमने अपने मेन्यू में ये लिखा है कि आपने जो है फ्रूट शेक लेना है, और उसमें हमने क्वांटिटी लिख दी है कि 2 फ्रूट्स प्लस हाफ कप मिल्क, तो आपने हाफ कप मिल्क के साथ कितनी फ्रूट की क्वांटिटी, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, जो भी आप फ्रूट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो आपने एट द एंड पेज पे जाके उस फ्रूट की क्वांटिटी पढ़ी, और वो उतनी क्वांटिटी आपने अपने हाफ कप मिल्क में ऐड करके ब्लेंड करके उसको पी सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद रमज़ान हाई स्टडी ग्रुप का इस बुक को बनाने का मकसद ये था कि हम सेफ फास्टिंग को प्रमोट कर सकें। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और इट वाज एन इजी प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैम। कुछ क्वेश्चंस आए हैं पेशेंट्स की तरफ से, वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा। एक पहला क्वेश्चन मैम ये है कि व्हाट शुड वी नॉट ईट इन सहरी। एक डायबिटिक पेशेंट ने क्वेश्चन किया है कि सहरी में कोई ऐसी चीज़ जो हम नहीं खानी चाहिए। शहरी में कोई ऐसी चीज़ जो है, सबसे पहले जैसे मैंने अपनी स्लाइड में बताया कि भाई खजला पेनी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की फेवरेट चीज़ है, और यूजुअली हर घर में ये कंज्यूम की जाती है। या खजला पेनी नहीं भी होता तो सेवइयाँ जो होती हैं वो दूध में आप जो है उसका डाल के इनटेक कर रहे होते हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने पहले ही रीज़न बताया, डीप फ्राइड होते हैं, फिर रिफाइंड कार्ब्स हैं, तो फिर आपको एक तो जल्दी भूख लगेगी, फिर वो जल्दी हजम हो जाएगा क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स हैं, फिर आपकी शुगर्स पे भी असरअंदाज होगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ये एक और क्वेश्चन आया था कि ये एक डॉक्टर कम्युनिटी से आया कि उनके पेशेंट जो हैं वो ये पूछते रहते हैं अबाउट राइस, जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में बता रही थी कि कार्ब्स और उनके, तो कौन से किस विच टाइप ऑफ राइस आर रेकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, और कोई ऐसा कोई पॉसिबल या प्रेफर्ड मेथड हो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसको मेंटेन करे, और उसका कितना पोर्शन जो है वो इफ्तारी में हम डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। राइस को हम जो है अवॉइड नहीं करवाते,
क्योंकि रोटी एंड चावल जैसे कि मैंने बताया स्टेपल फूड है और हम उसको जो है नहीं बिल्कुल बंद कर रहे होते, क्योंकि पेशेंट आपने बंद करवा दिया उसको। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने चावल कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपकी बात मान लेगा, लेकिन क्योंकि वो उसका स्टेपल फूड है, क्योंकि वो उसको उसकी पसंदीदा चीज़ है, तो वो उसको कंज्यूम करेगा। तो इट्स बेटर टू टेल देम कि आप उसको क्या पोर्शन ले सकते हैं। और फिर ये इंडिविजुअलाइज होता है, रेंडमाइज नहीं होता। आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसका वेट भी अच्छा है, उसकी हाइट प्रॉपर है, उसके वेट के हिसाब से सही है, उसका वेट हाइट के हिसाब से, तो फिर हम उसको कितना रिकमेंड कर रहे हैं। तो एक एवरेज जो हम लेते हैं वो हाफ प्लेट से 1 प्लेट वी कैन कंज्यूम, बट दैट शुड बी बॉइल्ड राइस। लेकिन अगर हम बिरयानी वगैरह का इंटेक भी कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी और कम कर दें, उसके साथ फाइबर जो कि हमें वेजिटेबल से मिलता है, सैलड से मिलता है, उसका इंटेक कर लें। तो फिर ये है कि फाइबर का इंटेक जब साथ होगा उसके, तो फिर हमारी शुगर्स पे जो है वो इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। इट विल बी नॉर्मल इंशाल्लाह। मैम ये एक और क्वेश्चन था जो कि इन्होंने पूछा है एक व्यूवर्स ने, कि व्हाई नॉट टू गो फॉर लो कार्ब और नो कार्ब डाइट। हम लो हाँ कार्ब और बेसिकली, नो कार्ब की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हाँ, नो कार्ब और लो कार्ब डाइट पे हम इसलिए नहीं जाते, जैसे कि मैंने अपनी उस पे बताया कि भाई लोग कीटोजेनिक डाइट को बहुत जो है प्रेफर कर रहे हैं आजकल, और उसमें बेसिकली दैट इज़ हाई फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। तो उसमें ये होता है कि आपने एक तो कार्डियोवेस्कुलर आपके फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा डी रेंज हो जाती है, इसके अलावा क्योंकि आप हाई फैट कंटेंट ले रहे हैं, आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं। इसके अलावा वही वाली बात, पाकिस्तानियों की स्टेपल डाइट रोटी चावल है, तो वी कैन नॉट अवॉइड दैट। तो हमें इसलिए उनको मॉडरेट कार्ब डाइट पे रखना चाहिए कि आप इतने अमाउंट में ले सकते हैं। ठीक। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है कि कैन वी टेक फ्रूट्स एज मच एज वी वांट ड्यूरिंग रमजान? एक्चुअली एज मच एज वी वांट हम नहीं, इसका नहीं हम कह सकते कि भाई आप जितना चाहें आपने ले लिया। ऐसा नहीं होता है। आप जो है इतना ही लेंगे जितना आपको अलाउ किया गया है। आपको 1 सर्विंग कही थी तो आप 1 सर्विंग ही लेंगे, क्योंकि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता है कि वो आपकी शुगर्स क्या जा रही हैं, आपका इंटेक कितना होना चाहिए, तो वो आपकी शुगर्स पे असरअंदाज नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास फ्रूट्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, और वो भी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो ये हमारे पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो इसलिए जितना आपको एडवाइस किया गया है उतना ही आपने कंज्यूम करना है। एक एवरेज 2 to 3 सर्विंग्स जो हैं आप ले सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे। इफ्तार में आपने 1 to 2 सर्विंग ले ली, दैट इज अप्रोप्रिएट। ठीक। थैंक यू वेरी मच मैम। कुछ हमारे सेशन का और जो चीज़ें थी वो हमारी ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और क्या आपने गेट्स फार्मा वेबिट लर्निंग सेल में अपना टाइम दिया, और हमारे जो व्यूवर्स थे और जो डॉक्टर कम्युनिटी थी कि उस पर हमने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी और जो किताब थी वो हमने पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।